100, more than 100 pending approval, but I want to organize it properly. That's why I hold like, and I also disable the member messages. तो कुछ लोगों ने गलत वे में ले लिया था क्योंकि it's purely announcement group, but that's not the case. I think old people already जानते हैं कौन है जो लोग पहले से ज्वाइन हैं पिछले कुछ हफ्तों से या महीनों से, and we actively interacting and having sessions and everything, right? पुराने लोग आज पुराने लोग नहीं आएंगे, हाँ, गुड. सो द पॉइंट इज, तो हाँ जो लोग फर्स्ट टाइम है मैं चाहूंगा क्विकली एक बार हैंड रेज कर सकते हो. फर्स्ट टाइम वाले हैंड रेज या थम्स अप, फर्स्ट टाइम वाले लोग. या कूल. तो यू रिसेंटली ज्वाइन, आप लोग शायद मुझे जानते भी नहीं होंगे और you know how idea about this iOS labs or iOS batch or something, anything like that. Cool. So thank you for everyone joining. तो हम लोग 2-3 पॉइंट एड्रेस करने वाले हैं क्विकली कि क्या हम लोग प्लान कर रहे हैं किस तरीके से हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं सबके लिए, एंड ऑल्सो हम लोग एक बैच भी रन कर रहे हैं पैरेलली, उसके बारे में बात करूंगा. एंड a brief about me and whole about this community and what we are planning and how we can start with this project and actually इसके क्या benefits हैं, क्या impact हो सकता है, वो सारी चीज. ठीक है. तो first of all let me introduce myself. So myself Kushal Jhalani. I'm currently working in Abu Dhabi from last 2 years around, and I have total experience around 9 years. And I'm the founder of iOS Labs. Also, I'm the founder of Intel Labs, which is a tech community. So Intel Lab is basically for freshers, basically more focused on freshers, and this iOS is especially for iOS people. That's why I started with a new name and with a specific this. I hope you like the name. You can thumbs up if you, because we actually I think about what would the name. So actually that Intel Lab is my past, so that's why I come up with the iOS Labs. And soon we are launching Android Labs and QA Labs and even backend labs kind of. So it's coming soon. But yeah, I'm the pure iOS guy. So I'm taking care of iOS labs, but other labs will take care by other people who are from those background basically. So QA lab will take care by QA engineer, SDT people, Android obviously from Android people, and other people like that. So I think मतलब कुछ लोग ऐसे भी जो हिंदी नहीं आती होगी. Anyone who don't understand हिंदी, तो please raise your hand. Everyone understand Hindi? All are Indians or are kind of no, अभी कोई foreigner जो नहीं किया. That is good then. Cool. तो fine. अभी okay, Sheetal, you don't know. I don't know Hindi, sorry. Good, no problem. And one foreigner also. Okay, fine. Then I will not speak Hindi or I will repeat in English both. Okay, fine. So first, let's talk about. I want to address quickly 2-3 points. But I think most of the people maybe haven't contributed in open source, right? So let me, even I can take a quick poll. Just tell me any previous experience with open source or not. So I'm just a minute. I'm raising a poll. If you guys can you on your cameras, it will be good. Otherwise, fine, no problem. So you can see the poll. It's launch. Poll section में you can find the poll and just vote yes or no, and please be responsive and be active. अभी total 42 people है यहाँ पे. 42 votes चाहिए मुझे. ठीक है, प्लीज एवरीवन वोट. ऐसा मत करना कि वोट नहीं कर रहे हो और क्या फर्क पड़ता है. नहीं, प्लीज फर्क पड़ता है एक्चुअली. एक एक वोट या एक एक आपका इंटरेक्शन इज इम्पोर्टेंट. सो या तो जस्ट टू नो कि किस तरह का ऑडियंस है, सो अकॉर्डिंगली आई कैन एड्रेस कि और आई कैन स्टार्ट विद दिस थिंग. Have you ever any experience with open source and how this thing is really amazing and how it can impact our career basically? So so far again 29 votes. अभी तक 14-15 people ने vote नहीं किया. Please vote man, please vote. जो लोग vote नहीं कर रहे हैं please vote. I'm just 1 minute last, we'll end the poll.
But yeah, most of the people so far we got 30 votes. उसमें से 25 votes saying no, 5 people are saying yes. So basically, it's kind of your first time. I can this, right? Yes, Anjali, you can ask question. You can unmute yourself. You can ask, or you can even type here. So, ठीक है. So basically, most of the people are not a bit comfortable with open source. Fine. I'm ending the poll. So thanks for responding and voting. So basically, मैं इवन हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं लोग हैं ऑलरेडी, बट मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, तो प्लीज जो पुराने लोग हैं थोड़ा 10-15 मिनट चीजें रिपीट होगी, उसके बाद विल स्टार्ट विद अदर स्टफ जो कि हमने उस दिन डिस्कस नहीं किया था. ठीक है. सो द पॉइंट इज okay, Anjali, I will address this thing later on, but basically you just ping me regarding this. I will update your WhatsApp. Okay. So प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ठीक है. आई होप सब लोग प्रोडक्ट बेस्ड डिसेंट कंपनीज में जाना चाहते हैं, एंड उसके लिए बेसिकली दिस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, योर गिटहब प्रोफाइल, योर लिंक्डइन प्रोफाइल रियली मैटर्स. तो मैं अपना कंटेक्स्ट दे दूं थोड़ा सा. इवन मैंने गिटहब पे पहले जो चीजें करी हैं, अब वो पिछले कुछ टाइम से कुछ नहीं किया है, और पहले की चीजें मैंने हटा भी दी हैं, तो मैं फिर से रिक्रिएट कर रहा हूँ चीजें बेसिकली. तो वो आपको चीजें नहीं दिखेंगी गिटहब पे, बट मेरा लिंक्डइन आप देख सकते हो. लिंक्डइन के बेसिस पे एक्चुअली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, एंड खुद रीच आउट किया एचआर ने या रिक्रूटर्स ने. और ऑल्सो दिस थिंग हैपन कि जब मैं किसी से रेफरल मांगता हूँ, तो आउट ऑफ 10 रेफरल्स में से मुझे 8 या 7 तक मिल जाता है. तो इट्स रियली गुड रेशियो इफ यू कैन रिलेट इट. सो द पॉइंट इज कि लिंक्डइन मैटर्स एंड गिटहब आल्सो मैटर्स, और इसी सब के चीज के लिए वी आर डूइंग दिस थिंग. बेसिकली आई वांट कि सब लोगों को इंटरव्यू कॉल्स आनी चाहिए एंड इंटरव्यूज निकलनी भी चाहिए. उसके लिए हम सेशंस कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं. And this open source project is both the context for learning purpose also, and for showcasing and for building a profile both. Okay, I hope this makes sense. You can thumbs up. Right? GitHub profile अच्छी करनी है, LinkedIn अच्छा करना है, इंटरव्यू कॉल्स आने चाहिए, रेफरल मिलने चाहिए, लोग एंटरटेन करें आपको जब आप किसी को रीच आउट करो, एंड अपना तैयारी भी इतनी स्ट्रांग हो कि इफ यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी यू इजीली क्रैक द इंटरव्यूज, और एकदम स्मूथली बढ़िया से. राइट, दैट्स व्हाई टॉक्ड अबाउट दिस थिंग प्रीवियसली ऑल्सो. मैंने ये बात बोली थी कि आपको मगअप नहीं करना है. डोंट गो विद एनी रैंडम इंटरव्यू हैंडबुक प्लीज. मैं किसी को यहाँ पे ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ. मेरी कुछ दोस्त हैं या कुछ कलीग्स हैं या जिन लोगों मैं जानता हूँ, वो अपनी हैंडबुक बना के बेच रहे हैं. इवन आई लाइक द कंटेंट, ठीक है, कंटेंट वाइज इज गुड, बट माई सी मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू हैंडबुक वगैरह ठीक है, हैंडी रखने के लिए रख सकते हो नोट्स वगैरह के हिसाब से, बट मेजर कंसर्न इज कि मैंने मतलब मैं ये बोलूंगा जैसे एग्जाम्पल के लिए टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जेनरिक्स. अब जेनरिक्स पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार इंटरव्यू में, तो you should know how basics of generic, how generic works, how you can write your own higher order functions, or how you can play with that, like how you can manipulate, how you can like modify those functions. ठीक है, how you can put your own logic, ठीक है, using generics. ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो? If you know these things now pretty well and you have a pretty good understanding, then you never be fear of or afraid of like in the interview in generics. तो उसमें भले आप कोई भी क्वेश्चन बुक हैंडबुक देख के मत जाओ. Simply you practice these things and go directly on interview and tell interviewer कि you can ask anything on generics, and you, I'm saying pretty sure कि you easily tell those answers, or you can implement in front of them right away. Is that making sense? Right? Is that making sense? So we actually want to follow this approach. If you are agreeing with this, please thumbs up so that मुझे लगे कि okay, we are aligned and we are on the same page. Everyone, yeah. Cool, thank you. So तो यही करना है भाई, राइट? तो बेसिकली हमें हर टॉपिक के डेप्थ में जाना है, फर्स्ट चीज, ठीक है. एंड हम टारगेट कर रहे हैं टिल बाय एंड ऑफ, आज अगस्त चल रहा है, अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 months वी आर प्लानिंग. तो बाय एंड ऑफ द अक्टूबर वी शुड कवर ऑल द टॉपिक्स. मोस्ट प्रोबेबली मैक्स नवंबर तक जा सकते हैं हम लोग, पर
टारगेट अक्टूबर का है। एंड उसके अलावा हम लोग इसमें 3 months में विल कवर ऑल दोस टॉपिक्स। एंड उसके अलावा हम लोग ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अब मैं प्रोजेक्ट पे आता हूँ, बट वाई वी आर बिल्डिंग दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज हम लोग जो भी सीख रहे हैं, विच टॉपिक्स वी आर लर्निंग, वी कैन pretty well, right, which we already discussed, right? Shushobit is there, and we actually planning this thing कि we go with every architecture pattern, design patterns in this project, even though एक pattern major होगा, suppose example के लिए we are following suppose wiper in the whole project or rips pattern or TCA or MVVM, ठीक है, but suppose one is the major and other patterns or other things we are implementing module specific for our practice and experimenting purpose or for our understanding purpose, ठीक है, that makes sense। तो हम एक ही प्रोजेक्ट में, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग, मुझे लगता है सारे सीनियर आर्ट्स इंजीनियर पे डेटा सॉरी डिजाइन पैटर्न्स, आर्किटेक्चर पैटर्न, सॉलिड प्रिंसिपल, ये तो मस्ट ही है, राइट, यू कैन स्किप दिस टॉपिक, राइट। और जितनी इसमें अंडरस्टैंडिंग डेप्थ में होगी उतना ही अगेन कॉन्फिडेंट होगा और उतना ही आप उस क्वेश्चंस में बढ़िया से करके आओगे इंटरव्यू में, राइट, मेकिंग सेंस, या मेकिंग सेंस, राइट, या। तो एक तो ये टारगेट है अपना। सेकंड, अपना गिटहब अगेन, अब जैसे एग्जांपल के लिए अभी रिसेंटली उबर में फोन पे में ओपनिंग चल रही थी, अगर मान लो आपको अप्लाई करना है और वहां पे अगर मैं सपोज करो फोन पे में काम कर रहा हूँ, टेक एन एग्जांपल, या आप किसी फोन पे के बंदे को रीच आउट करो, या फिर गूगल हो गया, उबर अभी रिसेंटली हायर कर रहे थे, अभी भी शायद कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी कर रहे हैं, ठीक है, आप उन किसी को रीच आउट करोगे तो अगेन जैसे मैंने बोला था, लिंक्डइन पे सब लोगों को ये अप्रोच पता है कि भाई अप्लाई बटन दबाने से कुछ नहीं होगा, आप उनको डायरेक्ट रीच आउट करो लिंक्डइन पे, वो आपका मैसेज पढ़ भी लेंगे काइंड ऑफ, पर उनको अपने जैसे और 50 पीपल्स आर रीचिंग आउट, मोर देन 50, मे बी 100। तो पॉइंट इज कि भाई जब 50-100 प्रोफाइल्स आ रही हैं तो हाउ दैट पर्सन डिसाइड कि भाई किसको रेफर करूं किसको ना करूं। अब आप अपने आप को उनकी जगह पर रख के देखना, यू इमेजिन कि यू आर एट हिज और हर प्लेस, हाउ यू विल सॉर्ट आउट और फिगर आउट कि टू होम शुड आई रेफर, राइट। एनी आंसर्स है किसी पे, कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? हाउ यू रेफर इफ यू गेट 100 DMs on LinkedIn for referring in your own company? Anyone? We'll verify the best skills for the specific job descriptions or job role. How you Whichever one, verify? All resume are mostly similar. All have all keywords. How you verify this thing? yeah, And how that you is compare? See, Submit you contributions. profile all have good resumes. Suppose 30-40 resumes are really good. Then how you compare based on resume? yeah, that is difficult for Difficult, right? Yes. yeah. So people also posting कि yeah, GitHub profile, LinkedIn, active on LinkedIn, check the GitHub. Too tough, man. I had such experience when I posted a job in my project, and I know 400 resume for I have to delete. Exactly, this happens. ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था when I was working in 2019 प्री कोविड, एंड मैंने एक फ्रेशर की ओपनिंग डाली लिंक्डइन पे, आज भी शायद वो पोस्ट पड़ा होगा, और मुझे लिटरली अराउंड मोर देन 500 रिज्यूमे आ गए थे। फ्रेशर्स की ओपनिंग थी इंटर्न की iOS में, प्योर फ्रेशर की iOS की, और मैं वहां पे एक ही बंदा था iOS का, एक स्मॉल स्टार्टअप इन पुणे। तो समझ रहे हो आप, अब मैं वहां पे एक्चुअली देयर सो मच वर्कलोड, और मैं रात को 2-2 बजे तक भी काम कर रहा हूँ, एंड उसके अलावा मुझे वहां पे एचआर की तरह भी रोल प्ले करना पड़ रहा है, उनके पास डेडिकेटेड एचआर भी नहीं है, इतनी छोटी कंपनी थी, ठीक है। समझ पा रहे हो आप इस बात को? कोई रिलेट कर सकता है कभी ऐसी कंपनी में काम किया जो एचआर नहीं और आपको भी कहीं ना कहीं एचआर की तरह भी रोल करना पड़ रहा है? मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। आई लिटरली एंजॉय टॉक विद पीपल एंड इंटरेक्ट एंड एड्रेसिंग देयर कंसर्न, ठीक है। बट द पॉइंट इज, मुझे ऐसे लोग मिले, फ्रेशर्स का घंटा अभी अलग टॉपिक हो जाएगा, पर मैं ब्रीफ कर रहा हूँ आपको जस्ट, कि people are actually not working or they're passed out 2-3 years back, like they're passed out of 2014, 15, 16 और 2019 में ओपनिंग चल रही थी, मतलब 3-4 साल से खाली बैठे हो या 1-2 साल से, एंड यू आर नॉट गेटिंग अ बेसिक जॉब, और उसके अलावा आपको बेसिक प्रोग्रामिंग, बेसिक डीएसए आर वीक, वेरी वीक, और वो खुद बोल भी नहीं कि वीक है, पर हमें जॉब दे दो सर, कुशल बस रेफर कर दो, जॉब दे दो, इंटरव्यू ले लो। मैं किस बेसिस पे लूं? इफ यू आर ऑलरेडी रेटिंग योरसेल्फ आउट ऑफ 10 यू आर 5, तो फिर डजंट मेक सेंस कि आई शेड्यूल योर इंटरव्यू, राइट।
डजंट मेक सेंस, राइट? तो ये एक दिक्कत है इंडिया में, चलो उस पर नहीं जाएंगे कि इट्स नॉट अबाउट इंडिया में, ओवरऑल भी कह रहा हूँ कि आप फ्रेशर हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, यू जस्ट कंप्लेनिंग कि मार्केट इज डाउन एंड ऑल दैट स्टफ. दैट होल थिंग इज बुलशिट एक्चुअली, बट अगेन वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. सो द पॉइंट इज अगेन, मैं अच्छा इसको सीनियर आईएएस इंजीनियर के कंटेक्स्ट में कह दूं, मार्केट इज नॉट डाउन. ठीक है, ये लिख के ले लो आप खुद लिंक्डइन पे जाओ, मैं पिछले 2 हफ्ते की ओपनिंग्स में ग्रुप पे डाल दूंगा. लिटरली बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हायर कर रही है. ठीक है, मैं राइट पे डाल देता हूँ, आप लोग को शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ. एंड यू कैन ऑल्सो वेरीफाई ऑन लिंक्डइन. किसी ने देखा है? रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले चल रही थी, हो सकता है आप क्लोज हो गई हो. आई एम टॉकिंग अबाउट उबर, माइक्रोसॉफ्ट, फोन पे एंड इंट्यूट एंड इवन जेपी मॉर्गन. इस लेवल की कंपनीज हायर कर रही है, राइट? Yeah, yes. Thumbs Last up. week I checked that Yeah, LinkedIn, Institute, and other companies as well. exactly, right. So the point is कि इस लेवल की कंपनीज हायर कर रही है, बट अगेन अब पॉइंट यही है ना कि इंटरव्यू के लिए कॉल मिलना चाहिए. इंटरव्यू का कॉल कैसे मिलेगा? प्रोफाइल डिसेंट बनानी पड़ेगी. प्रोफाइल डिसेंट कैसे बनाओगे? लिंक्डइन पे थोड़ा शोकेस करो और गिटअप बिल्ड करो अपना. 2 ही ऑप्शन है भाई, राइट? और कोई तीसरा ऑप्शन है क्या आपके पास? तो वो भी बता दो, अच्छी बात है. लिंक्डइन गिटअप इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली. उसके अलावा भी और चीजें होती है, बट लिंक्डइन गिटअप से आपका काम हो जाएगा अगर इसको ढंग से करें ना, तो उसकी बहुत पावर है रियली. मतलब इट्स रियली, मतलब क्या ही बोलूं मैं, सच में अगर लिंक्डइन यूज करना आता है किसी को तो यू कैन क्रैक वेरी ग्रेट कंपनीज. मतलब एटलीस्ट इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे. इंटरव्यू क्रैक करने का अपना अलग गेम है, पर इंटरव्यू तक पहुंचना भी एक अपना गेम है. तो ये गेम आपका हो जाएगा क्लियर. ये बात को रिलेट कर पा रहे हो कोई? कि आपको लगता है कि सिर्फ रिज्यूमे बना लिया हो गया अपना काम, अब बस अप्लाई बटन दबाओ और बैठे रहो घर पे? ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा है भाई. ठीक है, तो गुड. पॉइंटर्स टू पॉलिश, अनिल, मैं इस पे एक पूरा डेडिकेटेड सेशन होता है, बात करेंगे इस पे. बट इट्स नॉट अबाउट पॉलिश, मैं पॉलिश की बात ही नहीं कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन. यू शुड बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन. एक्टिव का मतलब होता है एक्टिवली लाइक, कमेंट और पोस्ट करना. और मैं पोस्ट को हाईलाइट करूंगा यहाँ पे. यू नीड टू पोस्ट समथिंग मैन. यू नीड टू शो कि आप अपने फ्री टाइम में भी यू आर लिटरली इन्वॉल्व इन iOS, इन स्विफ्ट, in this Apple ecosystem stuff, and you're really passionate and you're really interested in these things. वहां से समझ आता है कि आप कितने जेन्युइनली एक जेन्युइन पर्सन हो और कितने पैशनेट बंदे हो या बंदी हो. बात को समझ रहे हो? रिलेट कर पा रहे हो उस बात को? और उस इंसान को मैं पहले रेफर करूंगा बजाय किसी ऐसे इंसान को जिसने ठीक है लिंक्डइन पे बस पॉलिश कर दिया है और उसने पिछले 1 साल से एक भी पोस्ट नहीं डाला है, बस कहीं पे आई एम इंटरेस्टेड लिख देता है, कहीं पे लाइक कर देगा, बट पोस्ट वोस्ट कुछ नहीं. तो आप बताओ खुद. रीपोस्ट ठीक है, बट खुद का पोस्ट इज रिकमेंडेड, पर कुछ नहीं से बेहतर है. पर बेस्ट तो यही है कि आप खुद का पोस्ट डालो. अब तो यू कैन यूज चैट जीपीटी, जेमिनी, क्या क्या आ गया अब तो, राइट? यूज इट मैन, राइट? ग्रॉक है वगैरह, ये सारा मतलब यही वगैरह. इनके राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, मैं खुद यूज करता हूँ. राइटिंग स्किल्स आर रियली गुड ऑफ चैट जीपीटी. आई कैन से मैंने और बाकी यूज नहीं किए इतने, बट चैट जीपीटी लिटरली इज गुड इन राइटिंग स्किल्स. आप उसको टॉपिक दे दो, कंटेक्स्ट दे दो और अपना एक ड्राफ्ट कर लो. यू कैन ड्राफ्ट इट एंड देन यू कैन टेल चैट जीपीटी कि दिस इज माय ड्राफ्ट, फर्स्ट टेम्पलेट, मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट, एंड प्लीज रीफ्रेज इट विद दिस इंटेंशन एंड दिस कंटेक्स्ट दे दो उसको आप. एंड फॉर अ लिंक्डइन पोस्ट वो प्रॉपर्ली आपको दे देगा. उसमें फिर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो उसको और आप बोलो थोड़े मॉडिफिकेशन करने के लिए, वो प्रॉपर करके देगा. एंड लिटरली कई बार चैट जीपीटी इंप्रेस्ड मी. मतलब लिटरली मैंने बोला कि यार मजा आ गया पढ़ के. Seriously, LinkedIn works pretty well. Sorry, ChatGPT works pretty well in this kind of context. ठीक है, तो करो फिर यूज, टाइम बचेगा, राइट? कई लोगों के राइटिंग स्किल्स वीक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आप थोड़ा टेक्निकल कंटेक्स्ट तो दे ही सकते हो ना, इतना तो अपने को आता है, उतना दे दो, बाकी वो लिख के दे रहा है ना आपको, राइट? तो यस, बाकी मैं यही पे भी नहीं जाऊंगा, वो अलग टॉपिक हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप आप लोग एग्री कर पा रहे हैं इस चीज से. थम्स अप कर सकते हो. नाउ वी आर मूविंग टू द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. ठीक है, एक बेसिक कंटेक्स्ट देना था मुझे आप लोगों को. ठीक है, तो बेसिकली इन शॉर्ट मैं बोलूंगा, 2 लाइन में कंक्लूड करूं अभी तक जो बात करी है, कि फर्स्ट थिंग कि वी शुड गेट इंटरव्यू कॉल्स, और उसके लिए वी नीड टू बिल्ड आवर लिंक्डइन एंड गेटअप, एज सिंपल एज दैट. उसी के लिए सारा तामझाम कर रहे हैं. सेकंड थिंग, हम जो भी टॉपिक्स कर रहे हैं उसकी डीप डाइव पे जाना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन की कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ. और वो के लिए पहले तुम टॉपिक समझेंगे, वी लिटरली अंडरस्टैंड दैट टॉपिक एंड देन वी विल प्रैक्टिस इट, वी विल बिल्ड समथिंग आउट ऑफ इट. उसी के लिए हम ये प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं.
तो ये दोनों कंटेक्स्ट में है, टू गेट योर इंटरव्यू कॉल्स एंड टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज। इस बात को एग्री कर पा रहे हो? एक बार थम्स अप करो और इसको फिर हम लोग कंक्लूड करते हैं यहाँ पे, और फिर हम मूव करते हैं कि किस तरह के प्रोजेक्ट को वी आर प्लानिंग एंड हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट इन दैट थिंग। और कुछ लोगों ने वॉलंटियरिंग के लिए भी वोट किया है, तो मैं वॉलंटियरिंग पे भी थोड़ी सा बात करूंगा और उस पर हम एक सेपरेट कॉल भी लेंगे, ठीक है? दिलशाद, आई हाईली रिकमेंड डोंट गो विद एआई थिंग्स मैन, प्लीज। मैं सबको ही बोलूंगा ये चीज, एआई वीआई से मत पढ़ो भाई, ठीक है? अच्छे बेटर बढ़िया बेस्ट आर्टिकल्स आर देयर मीडियम पे, यूट्यूब पे, आप बेटर ब्लॉग्स है जैसे एवेंडरली हो गया, राइट, रे वेंडरलिच, इस तरह की चीजें अवेलेबल है। तो भाई फिर एआई से मत पढ़ो लिटरली इस बात को। और एप्पल के ऑफिशियल डॉग्स भी हैं, पर चलो ऑफिशियल डॉग थोड़े बोरिंग हो सकते हैं, तो आप एवेंडरली, आप अपना शॉन एलन यूट्यूब पे, आप अपने और भी बहुत हैं, राइट, medium.com पे बहुत लोगों ने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं बढ़िया बढ़िया टॉपिक पे। तो भाई इतना हैकिंग विद स्विफ्ट है, बहुत चीजें हैं, मतलब राइट। आई होप आप लोगों ने नाम सुनी होंगे इन सबके या देखा भी होगा। कोड कैट 15, यस यस यस, वन ऑफ मतलब वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है? तो मैं खुद इनका फैन हूँ, कोड कैट 15, शॉन एलन, और भी हैं लोग एक दो मेरे को, हाँ इन दो को तो मैं रिकमेंड करूंगा। और फिर एवेंडरली के आर्टिकल्स बहुत सही लगते हैं, एवेंडरली को जानते होंगे आप लोग, राइट? हाँ, आई कोड भाई, आई कोड, यस यस यस, iOS एकेडमी, यस। तो इतने बढ़िया चीजें हैं, तो भाई एक की तरफ मत जाओ। कहने का पॉइंट है ये सारी लिस्ट ग्रुप पे डाल देंगे, अभी इस पे बात नहीं करेंगे अपन इतना, वरना इसी पे टॉपिक पूरा 1 घंटा निकल जाएगा, ठीक है? द पॉइंट इज कि एआई से मत पढ़ो, इन लोगों से पढ़ो या इस तरह के कंटेंट को फॉलो करो। और अगेन प्रैक्टिस करना है, सिर्फ सुनना नहीं है या देखना नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, जितना आपको प्रैक्टिस करके, अगेन टेक एन एग्जांपल ऑफ जेनरिक्स मैन, जेनरिक्स का पढ़ के तो कोई भी आर्टिकल इनका निकाल लो जिनके भी नाम अपन ने लिए, यू गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ एनी iOS एकेडमी, शॉन एलन, कोड कैट, किसी का भी जेनरिक्स पे। आई कोड का आई थिंक नहीं है वीडियो, होगा तो आई कोड का भी देख लेना। और द पॉइंट इज कि वो वीडियो देख के थोड़ा बेसिक तो समझ आ जाएगा, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और तब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू कांट राइट योर ओन कस्टम हायर ऑर्डर फंक्शंस। इस बात को समझ पा रहे हो? यू कैन एग्री? बहुत बेसिक टॉपिक का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट लिटरली, और ऐसे ही फिर डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न में तो हाईली रिकमेंड किया प्रैक्टिस से ही सीखो, पढ़ने से थ्योरेटिकल आर्टिकल डजन वर्क्स मैन, डजन वर्क्स, ठीक है? रट के जाओगे वहां, दो डेफिनेशन बोल दोगे इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू को ऐसे समझ जाता है कि बंदा रट के आया, ये जेन्युइनली इसने पैटर्न कभी यूज किया था। लिटरली बता रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो, ठीक है? कूल। तो अब हमको एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाना था, हमने 2 शॉर्टलिस्ट किए हैं। फर्स्ट इज अ मैट्रिमोनी ऐप एंड सेकंड इज योर सोसाइटी मार्केटप्लेस ऐप, सॉरी, सोसाइटी मार्केटप्लेस। सोसाइटी मार्केटप्लेस इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर फाइवर, आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, और आपका थोड़ा सा अर्बन क्लैप, ठीक है? इनका कॉम्बिनेशन है, तो आई कैन से इट्स लाइक अ फाइवर प्लस अर्बन क्लैप प्लस अमेजॉन स्लैश फ्लिपकार्ट, ठीक है? इस तरह का प्रोडक्ट है वो। आगे मैं उसके डिटेल पे उसका पीआरडी भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों को, अभी तक वो रेडी नहीं हुआ है, इट्स इन प्रोग्रेस। सेकंड अपना जो है, जो मैंने आज शेयर किया, विच इज अ मैट्रिमोनी ऐप, जो कि मैंने आपको शेयर किया है। एनीवन गॉन थ्रू द डॉक सो फार? यू कैन थम्स अप और हैंड रेज हैंड और समथिंग। Yes. लेकिन सॉरी टू से, बट आप लोग इस तरह की चीजें रिएक्शन से बताओ, क्योंकि अनम्यूट म्यूट से वो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है? राइट, तो बेसिकली राइट, आई होप डॉग गो थ्रू कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आफ्टर दिस सेशन जब भी टाइम मिले मीटिंग के बाद भी कर सकते हैं। पॉइंट ये कि आई होप फिर कंटेक्स्ट मिल गया होगा आपको, और आई एज्यूम या आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने मैट्रिमोनी कभी यूज किया हो, पर हो सकता है कभी ना भी किया हो, ठीक है? डिपेंड्स। तो अभी कैसा सीन है, मैंने लास्ट में पूछा था, उसमें भी 50% ऑडियंस इज लाइक दे आर अवेयर अबाउट मैट्रिमोनी एप्स, 50% आर नॉट अवेयर। आज भी मैं क्विकली पोल लूंगा, तो मुझे एक आइडिया लगेगा कि हाउ यू प्रिटी मच, क्योंकि उस कंटेक्स्ट पे फिर हम बात कर पाएंगे, ठीक है? तो लेट मी क्रिएट अ पोल, एनी एक्सपीरियंस के लिए बता रहा हूँ उसमें, जैसे आपके शादी.com, जीवन साथी, भारत मैट्रिमोनी, आई होप नाम तो सुने होंगे। और जो लोग फॉरेनर्स हैं, तो मैं फॉर नॉन इंडियंस और फॉर फॉरेनर्स, मे बी इन योर कंट्री, आई डोंट नो कि मैट्रिमोनी इज देयर और नॉट, और व्हाट द अदर एप्स आर वर्किंग, बट typically it's a what I can say, like, I think it's a yeah, I can explain. It's a app
who like allow you to find your life partner, Exactly, but not in dating context. Okay. not in अच्छा dating. लोग भाई लोग टिंडर से मत जाओ, टिंडर के कंटेक्स्ट में मत जाओ. डोंट गो इन कंटेक्स्ट ऑफ टिंडर. बट अगेन दोनों का यूआईएक्स काफी अलग है. आई होप जिन्होंने टिंडर भी देखा हुआ कई लोगों ने, टिंडर में और शादी.com में जमीन आसमान का फर्क है. ठीक है. तो डोंट गो विद टिंडर. हम लोग डेटिंग ऐप नहीं बना रहे हैं. वी आर बिल्डिंग अ मैट्रिमोनी ऐप. तो हाँ, बेसिकली सुशोभित, थैंक्स फॉर दिस. तो इट्स लाइक अ फाइंडिंग योर लाइफ पार्टनर based on your like some filters, some your preferences and like that, and then you will have see the profiles, and you can then reach out to those people and then you can go ahead, right? It's like that. ठीक है. तो हाँ, मैं एक मिनट बोल डाल रहा था. तो मैं एक पोल डाल रहा हूँ, प्लीज वोट करो सब लोग फटाक से. एक सेकेंड. पोल लाइव हो गया, देखो एक बार. पोल इज लाइव. एनी एक्सपीरियंस विद मैट्रिमोनी ऐप, कोई भी ऐप कभी लाइफ में देखी सुनी, देखी दूर से थोड़ा सा, तो यस नो प्लीज. सफेद yes, actually go ahead means yeah, you can like family details are there in the app, normal details, professional details are there, diet preferences are there, hobby interests are there, these kind of details are there, even your birth date and all that. But there are some privacy things you can hide, show that thing, and you can reach out to either that person or his family or her family, depend on ki profile pe kaun si details shared hai, depends on ki the person shared his or her number or parents number, or sometimes parents create their child or matlab, son or daughter profile, or sometimes some relative or friend also create a candidate profile. Okay, does that make sense? So that depends, and then accordingly that you can connect. And in the app also there is a feature of chat and video chat and normal chat. Padmaj, it's not like for dating or for marriage. Again, it's going in wrong context. It's not like that. But I would highly recommend आज जब भी time मिले or maybe tomorrow, please install. I will give you the list. मैंने पहले भी लोगों को दी थी. Please create a dummy test account on Shadi.com, Jeevan Sathi and Bharat Matrimony. These three apps are in India. It's top 3 apps. And use it, sign up, create an account, take some screenshots, screen recordings, so that you can relate to it later on. Also, you can go through it. And in general, also use it in some daily, like 30-15 minutes. So you get eventually the feel of it, ki how this app solving the problem of finding a life partner. Okay, UI UX ka feel le lo. Our UI UX is going on. You will soon get the designs. But yeah, in the meantime, we need to also work on the backend part. We also want to work on the basically iOS structure, architecture decisions and everything. तो हम लोग तब तक वो करेंगे और थोड़ा सा UI UX we can start. In the meantime, we get the designs. ठीक है? No, it's not like that. It's like you're first knowing that person. You want to understand that person, and then at the same time, one person can talk to 10 people. Okay, but then parallelly you're like in the conversation with more than 5-10 people, and then eventually you will shortlisting one, or maybe you're not shortlisting at all. That could be the case. But eventually if you're going with the one person, then you can go for the marriage. And it's again, app is basically helping you to connecting. Later on you can connect on your own personal number, WhatsApp, Google Meet. That doesn't any control of that app. Okay, that also the thing. Or in person you are meeting, that is not in the app picture. Like app is out of the picture after once you have the contact details. Then later on you can just simply uninstall the app. Okay, so I hope it's making sense, Kunkuro. Yeah, you are from which country? Sorry, could you give a context? You are from which country? Indonesia. Okay, so I don't have any idea about Indonesia, but yeah, cool. So okay then guys, so yeah, poll पे we'll go. Poll पे कितने वोट आ गए? 28 votes. बाकी 12 लोग अभी वोट नहीं किए. 41 में से only 28 votes. Why?
गाइस प्लीज वोट यार, प्लीज वोट, इसमें आलस मत करो एटलीस्ट। अगर अच्छा आप लोगों को पोल नहीं मिल रहा है तो प्लीज कोई बताएगा पोल कहाँ दिखता है? एनीवन प्लीज एक्सप्लेन वेयर टू फाइंड द पोल, बिकॉज मैं एज अ एडमिन हूं तो मुझे आप लोगों के अलग वो होगा, राइट? Yeah, once you will create the poll, the notification will come. And one tap this for No, so the someone gets the notification, then he or she can find. instantly on the raise hand, the notification pop-up will come. The poll pop-up. When tap on this, the detail pop-up will come for with poll question and yes no answer. Okay. Under the tool you can find. So Kushan, basically, once anyone creates a poll, everyone gets a notification. And guys, if you miss the notification, on the right hand bottom corner, there is a hamburger like circles dot icon. Click on it. You will find the poll there. Perfect. Yeah. Thanks everyone. So I hope अब जो लोगों को पोल नहीं मिला है, please find the poll and vote it. I'm closing this poll in next 30 seconds. But please vote, yeah. So, but mostly people saying out of 32 votes so far, we received like 30 votes, 1-3 for yes, and 19 votes for no. So I can say around out of 30 is like somewhere around 40% people used Matrimony app so far, and 60% audience no experience with Matrimony app. Right, cool. That just I want to know how much you're aware about these kind of apps. Cool. So I'm ending the poll and thanks everyone. So let's jump to the PRD doc quickly. Yeah, Kunogo, even in India also, Bumble Tinder is very famous. But again, that is for dating purpose, or maybe you can go into relationships and all, but not for the marriage purpose basically. But if you're coming in on the Matrimony apps, your main intention is to go get married basically with that person, or you're looking for a life partner. So that's a core basic fundamental difference. And also in Matrimony apps, you have all the family details and all your other so many details, which normally on dating apps you don't have like this, right? If this making sense, you can thumbs up on other people also, right? I'm saying right. So this is a core fundamental difference. On Matrimony apps, even you can see the family details, family income, your profession, okay, your current company, all that details, okay, your religion, caste, your birth time, birth date, everything. Food preference is fine, even you can find on Tinder. But right, these kind of details you can't find on any random dating apps, right? So, cool. So let me share my screen just just a minute. Okay, let me know once my screen is visible. Is it visible, right? Visible? Thumbs up. Yeah, thanks. So temporarily we just named it Humsafar, but it's okay. Name se farak nahi padta. So the point is key basic stuff is mentioned here. Even this is the first draft of PRD doc. Eventually we'll update it, but you can go through it once. Key what kind of goal of this product? Okay, what kind of target audience we have, what kind of countries we are targeting, what kind of key features basically in this app. So that you can go through it. Okay. Then also you have this, you can avoid this timeline is roughly like timelines. And future enhancement, you can see this we also planning. So we'll introduce some AI features also into this, which are not right now in the existing Matrimony apps in India or even in other countries. Okay. Then also
this you can avoid. But yeah, kind of we will have backend team, we have UI UX, we even have QA team also. Okay, we actually we are building a production ready app, okay, for millions of users. Okay, in that context we are building this app. Okay, so we pretty make sure that our code quality is great and our product quality is also great. Okay, so we are going to follow kind of minimum 2 approval for every MR or every PR pull request, right? So that we already discussed in our last meeting also, but most of the people are new here today. So the point is key. Most of the companies we follow this kind of thing. Key for your every PR, minimum 2 people should be required for approval. So that kind of things we are going to follow here also to make sure the code quality, clean code, all that stuff should be properly, and every feature or every stuff is going to test properly. We going to track those things. So we are going to use GitHub issues and GitHub project management tool for kind of Jira. Basically, I hope everyone aware about Jira. You can thumbs up once. Jira, you know Jira, we create a story epic there, task and everything, right? So task. So similar thing we are going to follow here also, so that it's pretty easy to manage the things, view status, progress, everything we should easily track, and we can help each other to build this product. And eventually we are learning also, so both the things should be there, right? So yeah, that's a basic doc. You can go through it. And so now I'm coming up with this. So we still have an open discussion. So last session we also discussed on this thing, but yeah, that's an open point. We actually planning to discuss this thing on weekend, mostly on Sunday. I will let you know the exact timings. So please try to join that call, because it's a discussion about which architecture pattern, which design patterns we need to use in this project. Majorly kind of, because some things we are going to do experiment, but one major pattern is actually following or implementing in the entire app. So which kind of pattern, design patterns we should use here, which kind of caching stuff, take a database, local database, then networking wrapper, then we have even what, like all that stuff, like I'm saying, even you can say yeah, all that, like keychain, SSL pinning, all that, but that is a generic thing. But yeah, I hope you're getting my point. So all these things we need to, it's an open thing. We need to finalize key, which we need to use and which it's like again testing framework, right? Right, yes. So saying the same. So even you have an option of quick and nimble, you also have other options, or you can simply use Apple library, right? So exit test and all that thing. So we will see. Yeah, push notification, yes. So all those stuff. So what's your task is, in next 2 days, you do your OR R&D and then come up with some points, with proper points, I can say. Suppose take an example, someone is saying he use Viper and someone saying use MVVM, or someone saying he's using TCA. So you should have proper point why we should TCA and why not MVVM, or why should go for MVVM or why not Viper, or why Viper, why not MVVM. Getting a point? Thumbs up once. Okay. Or even you can have a point on why go with coordinator pattern, why not adapter, designer, factory pattern, or in a multiple combination we can use. Okay, sorry Anil, forgot to mention, it's going to be built purely in SwiftUI, but in some cases we are going to use UIKit wherever SwiftUI lacking behind, or some complex thing which actually properly still not addressed through SwiftUI. So I will not going into details right now, but there are few things you can find even on internet or LinkedIn, mostly people are talking about. So in those contexts we can use UIKit. But other than that, more than 90% app or code base in SwiftUI only, hardly 10% code base in UIKit. Okay, makes sense. Second thing, what people ask, core data, Swift data, we have 2 options. So yeah, we can go with even Swift data as well. Raj, it will be fully native app, right? We are iOS people, iOS, right? So it doesn't make sense of KMP, right? Yeah. Cool. Any questions? So Thursday, CI/CD, let's see GitHub Actions mostly. GitHub Actions. Okay, for that actually we need to eventually see the cost and all that part also. So, but later on it will come into the picture. Not right now, like it has some time
to take a call for that. Okay. Also, I raise कि if someone interested for backend, you can join. I will share one poll. So if you are interested for backend, few people already share their interest. Because we are planning a backend in Node.js. So if you're interested, or even Swift as a backend in a Vapor or something like that, so let me know. We'll see. Like we will include you in the backend team also, and we'll build something for backend APIs. Okay, so far good. So yeah, I think that's it from my end. I just giving you one task. Please do, like today's Thursday, so Friday, Saturday, 2 days, whenever you get time, please do R&D on these things which we have, which I mentioned just now, and I will even share this recording whoever not able to join this meeting. So do your R&D, do your some research. Do you have some proper genuine points, and then let's discuss on Sunday. Okay. So yeah, that's it from my end. You have any questions you can ask, otherwise we can wrap up this call. Ankit, we are going to as a team project. So actually what is my plan? So suppose I'm giving you an example. Suppose 50 people are actively contributing in this project. Okay, maybe more than 50, but I'm just giving an example of 50. So we will going to build something around 10 teams of 5 people, and 10 team will work on actively on 10 features. Okay, something like that, which we kind of do in product based companies. So feature based teams are there. Okay, makes sense. Aman, sorry, I think I missed your question. In PRD it was written that MVP was supposed to be. No, I think it's by mistake. Sorry for that. It is by mistake. Okay, I quickly actually created through using ChatGPT and all that. So maybe they put this thing, but intentionally I haven't put this thing. Okay, so sorry for that. Yeah. Minimum iOS version we are targeting mostly 15 or 16, because I want to use the latest things in this project. So even we don't care if our app is not supporting the older versions, that is fine for us right now. Eventually, suppose you want to support older versions, we'll later on look into it. But right now, we are mostly going with the latest iOS versions. So we can go with 16, I can say, because in 16, some new things are introduced, which is not in the 15 or 14. So mostly, I think 16 would be the best one. But yeah, still, it's an open question. So we can discuss this thing on Sunday also. We'll discuss this thing. Cool. Anything else I'm missing? अंकित कह रहे हैं 17 या विल सी, मतलब हम देखते हैं, विल कंपेयर कि इफ इट्स अ मेजर डिफरेंस और समथिंग ऐसा कि जो कई चीजों से हमें रोक रहा होगा यूज करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली दैट विल डिस्कस. या पेमेंट फीचर रहेगा शीतल, सो वी मोस्टली यूज लाइक स्प्राइट, सॉरी डिपेंड्स, क्योंकि ऐप स्टोर के थ्रू भी हमको सब्सक्रिप्शन देना है, तो वी गोइंग टू यूज एप्पल ऐप स्टोर वाला फीचर एंड पेमेंट सब्सक्रिप्शन एवरीथिंग. So yeah, we are going to use. So still again, these are open things. Ki which framework, tool, or library we should use, or SDK. Cool, Aman. Yeah, but it's not only about SwiftUI, Aman. I'm saying like Apple introduced in something in 16, so which is not in 14. So that is the concern. ठीक है, तो उस context में कह रहा हूँ. Cool. Anyone else? Any questions? तो ये open questions है again. Please again do your some R&D. और अमन मैं आपके लिए भी टास्क देता हूँ कि आप खुद सर्च करो 16 में क्या नई चीजें आई हैं जो 14 में है ही नहीं. तो अगर मान लो वो हमें यूज करनी तो हम 14 में कर ही नहीं पाएंगे, राइट? इसलिए वी आर अवॉइडिंग 14 एंड 15. ठीक है, दैट्स द पॉइंट बेसिकली. सो तो ये लोग आप अपनी थोड़ी R&D करके आएंगे, हम लोग इस पे एक बढ़िया डिस्कशन होगा और फिर हम चीजें फाइनलाइज करना शुरू करेंगे. ठीक है, मेक सेंस? आई होप सो. थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड यू आर रियली like okay, मैं बता दूं, मैं even I don't want to make this group as a random WhatsApp group. So many WhatsApp groups are there in the market. I hope you're already aware about it. Most of the people are part of it also. That's why I disabled it, because I'm planning in some different way to ask for referral or to share a job opening or even ask related to your day-to-day work. Like these kind of contests, we actually planning to organize it properly, and really some important insightful discussions in the group, and some other stuff like some creative and all that thing. So please have some patience, be like
Stay tuned, and eventually I will let you know what we are planning and how we'll implement these things, and you will see in the coming week. Okay, but yeah, the thing is, I hope like you will love this thing, like, so definitely help you, and for everyone actually. It's not for you, it's for me also. So for everyone, this is going to be an amazing experience, amazing community, and eventually we are going for the worldwide. So right now, I know 80-90% are Indians only, but it's not only India specific. So it's a globally, like, so that's already mentioned on iOS Lab. We have people from like Europe, UK, and other countries like. So yeah, eventually we're going to be a big community. But my point is ki it's not about the count, it's about the quality and really impactful and meaningful things. Okay. Not a random group, not a random community, or not a random spam messages. Okay, that is my intention. And eventually we're also going to move Slack or Discord. But so in the meantime, initially I intentionally on the WhatsApp. Literally, we like slowly, gradually will do these things, because people, I found, even previously I was experienced with community experiences. So people normally active on WhatsApp, but not that active on Slack or Discord. But once we start the project wala thing, that is dedicated to project stuff. That obviously we're going to collaborate on Slack and these things, Teams or maybe Discord. But apart from that, our community should be active on both. Like I feel personally, like WhatsApp also and your Slack also, kind of. Okay, but what is my point? What kind of thing are active here and what kind of acting there? Like that, I will tell you in detail. But I hope you're getting a point somewhere. So please thumbs up if you are relating this point. And yeah, so that's it for now. Thank you everyone, and see you on Sunday. Most probably on afternoon Sunday, 2:30 p.m. IST. Okay, I know in for some country, other people like foreigners or other time zones, it is a bit difficult, time zone issues. But please try if you can. But because I can't obviously address all the time zone here, but yeah, I'm mostly trying to address major audience, so which is basically from that time zone. So afternoon we are targeting at 2:30 p.m. IST. I will share the exact details in the group. Okay, mostly by tomorrow I will share the details, and on Sunday we are going to connect. In the meantime, please do your R&D and have some good points, and let's build this project and let's learn our topics, thorough understanding, proper practice. So we'll crack the interviews. We'll be good, right? Okay then. Yeah, Rishi, we are going to build both projects, but initially we're starting with Matrimony. Second project is your society marketplace. That also you come to know later on. Because if we have enough good developers and active people, then obviously I will make sure that two projects parallelly we are building. Okay? So it depends on the bandwidth and the people and how they're active and how they are contributing. Cool. Yeah. So thank you everyone. See you on Sunday. Good night. Take care. Thank you. Thank you, bye. Thank you. Thanks, Kusha. Bye. You